Hello, guys. Welcome back to my channel. Today, I'm going to be talking about why you should not compromise on your desires. And secondly, please consider subscribing to this channel because मैं बहुत अच्छे content डालती हूँ on law of assumption. I cover success stories. I cover the basics. What you should do in your 3D reality. What should you not do, and pretty much everything. So, if you are interested in this content, please subscribe to my channel. And if you want to take one on one sessions with me, all the details are in the description below. You can either mail me or WhatsApp me. Details are provided in the description. So, let us start with why you should not compromise on your desires, and I will not let you. See, one simple fact, आपको हज़ारों वीडियोस के एक्सेस है. ओके, you know exactly what the law of assumption is. You have might have tried and tested it. आपको पता है कि आपका your thoughts are creating your reality. Your persistence is creating your reality. When you live your best life, 70 to 80% आप अपनी लाइफ अपने बेस्ट दे रहे हो. That is also part of self concept, right? That is how you are living your life. You are attracting the best possible things out there. Then why do you have to compromise? आपको सारी चीज़ें पता है. एक पेज पे लिख के ले लो, उसी पेज को बार बार देखो पूरे दिन, और अपनी पावर को समझो. When you repeat those things to yourself that yes, I am the creator, मैं जो भी सोचूं वही क्रिएट होगा. क्यों फिर बुरा क्यों सोचना, अच्छा ही सोचो ना. What do you have to lose anyway? What do you have to lose? If you want something, you look at it and you're like, बुरा सोच के तो मुझे पता है कि कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है. Why not speak good? Why not ignore the current 3D and live in your imagination and live your best life? What do I mean by that? See, it obviously depends person to person. सबके लिए possible नहीं होता है. But I would strongly advise for everyone, every single person who is watching this video, who is into their manifestation journey, कि अपना self concept strong रखो. What do I mean by that? See, for me, self concept is really not about speaking things like it's like I am this, I am that. Obviously, it is also important. For me, self concept is more like to live my life completely, to live every moment completely. I have a list of things I do. I have a book. I literally have a bucket list book where I have around 600 to 700 things I want to try in this lifetime, starting from making a coffee latte at home to the biggest things like seeing the Egypt pyramid. So मेरे, like, I value my life so much that the little things matter so much, that make me happy. Like watching a series because it is introducing me to something new, it is taking me to a new place. तो ये सब matter करता है, because that itself puts you in that energy that I have everything I want, I am so happy. This is the reason why self concept is important. Then second part of self concept is how people around me treat me. Because एक चीज notice करो, when you're living your life completely and there is someone who's always nagging you, that you don't feel very well, right? So I have the authority to change that सामने वाले person. How? By just speaking good things about that person for like continuous 10 minutes, right? And then get about with my life. You will see your 3D change दिखेगा आपको. You don't have to worry about it. ठीक है? And then third comes to where my self concept, both these things are very strong. Then I'll be like, yeah, I am powerful. Okay. So isme bhi there are two things I consider.
me speaking things into existence, meaning I am the creator. I have the authority to rule this world. This world is mine. These people, every one of them, I rule them. And I don't mean it in a bad way. I just mean it कि मैं कुछ भी सोचूं वो वैसे ही act करेंगे. If I think that, for example, this friend of mine is like my best friend, वो वैसे ही act करेगी. If I think that, oh, she's an okay person, वो वैसे ही act करेगी. So why not speak everything in my favor? ये मेरी life है. Why would I make things difficult for me? बुरा मत बोलो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो. क्या ही होने वाला है? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ना, सामने वाले को बुरा बोलोगे, सामने वाला आपको कुछ बुरा करके दिखाएगा, एंड देन योर लाइफ इज गोना बी लाइक मज़ा नहीं आ रहा है, राइट? सो इसी कारण you have to also treat yourself and let people around you treat you with respect, treat you with love, treat you with kindness, treat you as if you are worthy, and say to yourself, I am worthy of all my desires, and respect the life that you have given. Okay? And एक चीज़ याद रखो, ये वीडियो तक अगर आप आए हो और बाकी सब लॉ ऑफ अजम्पशन वीडियोस आपने देखे हैं कोई भी कोचेस के, दैट मीन्स यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर डिजायर्ड लाइफ. ठीक है, समझ लो बस एक बार ये पूरे लॉ ऑफ अजम्पशन को समझ लो. वो सी हाउ योर ब्रेन वर्क्स, अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन वर्क्स. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट. एंड द बेयर मिनिमम यू हैव टू डू इज, बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, just speak good things in the morning and at night and in the middle for like 10 to 20 minutes. That's it. एग्ज़ाम के लिए तो भाई पूरे दिन पढ़ाई करते हो ना, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए इतना सा नहीं कर सकते. एंड बाकी सारे टाइम में अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपना काम करो, अच्छे से काम करो, यू नो, डू द लिटिल थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, एंड जस्ट सी हाउ ऑल योर डिज़ायर्स कम टू यू ऑटोमेटिकली. सब कुछ अचानक से चेंज होने लगेगा. या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि एक सब्लिमिनल लगा के बैठ जाओ. यू डोंट हैव टू पुट हेडफोन्स इन. ठीक है, बिना अजम्पशन ही बना लो मैं कुछ भी करूँ सब काम कर रहा है, बिना हेडफोन्स के भी यू कैन लिसन टू अ सब्लिमिनल. जस्ट कीप इट ऑन इन द बैकग्राउंड. नो, व्हाट डू यू हैव टू लूज एनीवे? जस्ट कीप इट ऑन. यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग. अगर आपके पास टाइम नहीं है, रात को सोते वक्त एक सब्लिमिनल लगा के सो जाओ अपने डिज़ायर के रिगार्डिंग. You will see the changes. It is not possible that you won't see changes. Okay, just say everything works for me, every single thing works for me. You आप normal इंसान नहीं हो. You have to understand that you're a universal being. You are a master. आप एक ही लाइफ को देखते हो, आपके पास multiple lives है, infinite lives. And your superpower is that you can jump into any of these lives at any given point. So इतनी सारी चीज़ें तुम्हें पता है. इट इज़ सो कूल, आई टेल यू. और आप क्यों फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि यार ठीक है एसपी मिल गया बट इन लॉज बुरे हैं, चल जाएगा पर एसपी तो मिला. अरे क्या मतलब? नो. आपको नहीं पसंद, चेंज करो. आप अवेयर रहो कि आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है, फ्लिप इट, फ्लिप इट. ओके, आप पहले आइडेंटिफाई करो कि अच्छा ये चीज़ नेगेटिव है मेरे दिमाग में, लिख के रखो. चाहिए तो अपने मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग क्या नेगेटिव है, फ्लिप इट एंड से इट. कुछ नेगेटिव आया, इग्नोर करो. आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन हाउ टू इग्नोर योर 3D एंड नेगेटिव थॉट्स एंड हाउ टू डील विद इट. उतना ही करना है आपको एंड लिव योर बेस्ट लाइफ. आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ बेस्ट लिव करोगे एंड आपके डिज़ायर आपसे दूर भागेंगी? Doesn't make sense to you? No, no. When you value yourself, when you value your life, things will come automatically to you. आपको वो डिज़ायर के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है. Your desires will come to you. Trust me on that. Trust me, okay? When you feel happy, everything comes to you naturally. So, guys, do not compromise on your desires. I'm telling you, do not compromise on your desires. जो भी आप चाहते हो लिख के रखो. सारी चीज़ें चाहते हो वो लिख के रखो. मिनिमम, बेयर मिनिमम 20 मिनट्स आप लिखो, स्क्रिप्ट करो, जो भी करना है करो. और बस इतना बोलो कि मैं जो भी कर रही हूँ वो काम कर रहा है. आई एम एंड जस्ट बी ग्रेटफुल. आई एम डिजायर्ड, आई एम लिविंग इन माई डिजायर्ड रियलिटी. आई हैव शिफ्टेड टू दैट रियलिटी वेयर एवरीथिंग इज फाइन. ओ माई गॉड, दिस इज सो अमेजिंग. एंड लिव योर लाइफ. ट्रस्ट मी, you will see changes in your life, and this is the bare minimum you can do to change your life, guys. This is the bare minimum.
Okay, so I hope I have inspired you enough that you will not dare to compromise on your desires, and I will not let you. Trust me on that. I will not let you. Do not compromise on your desires. I've given such beautiful examples. I've told you why exactly you should not, because you have a lot of superpower to give it away. Okay? Everything works for you. Everything. You are a success story already. Everything is working for you. And yeah, I love you all guys so much. I love you all so much. Thank you for supporting my channel. It's growing. I love it. It's growing so much, and I'm getting so many clients. I'm changing so many lives, and I'm so grateful for all of y'all. Yeah, happy manifesting.